Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 and the name of our unit is State and Government. Today I am going to deliver its 5th lecture, and in today's lecture we are going to study about the responsibilities of Pakistani citizen under the Constitution of 1973. The lecture is 5th and let's start it with an activity. So my dear students, as previously हमने discuss किया था rights of the citizen, तो आज हम activity क्या करेंगे? You need again a pen and a paper and write down the responsibilities I fulfill daily. यानी कि daily basis पे आप जो responsibilities fulfill करते हैं, write at least 5 of your responsibilities on the paper. Pause the video and quickly complete it. Very good. I hope everybody has written the responsibilities. So my dear students, आपने अपनी responsibilities जो लिखी हैं quickly again pause करें वीडियो को और read out करें इनको loudly कि क्या आप ये responsibilities जो daily basis पे fulfill करते हैं इससे किसी को फायदा होता है या नहीं होता, साथ साथ ये भी सोचिएगा. Very good. So all of you fulfill your responsibilities. That's a very nice thing. So my dear students, now let's quickly refresh the knowledge. What are responsibilities? Responsibilities are the duties that one person must fulfill. Okay, what are your responsibilities as a citizen? Follow rules and laws, work hard, and keep everybody around you safe from your hands and from your tongue. Do not disrespect anyone. So these are some basic responsibilities of a good citizen. How are you responsible to fulfill your duties? आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल है? करते भी हैं कि नहीं करते? सिर्फ पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर कोई जो है उनको पूरा नहीं करना. आई एम वेरी श्योर कि आप सब जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते होंगे. वेरी नाइस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. सो अकॉर्डिंग टू अ हदीस, whoever sees wrong, he should change it by his hands. If he could not do so, then he should change it by his tongue. If he could not do so, then he should do that by his heart. He should do that by his heart, and that is the weakest of faith. So my dear students, नबी पाक फरमाते हैं कि अगर कोई बुराई होते हुए देखो तो उसको जोरे बाजू से रोको, अगर नहीं रोक सकते तो उसको जबान से बुरा कहो, और ये भी नहीं कर सकते तो उसको दिल में बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है. तो हमें हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ गुड सिटीजन, कि हम हमेशा बुराई को रोके, उसको बुरा कहें. Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 37 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page, so let's start the reading. I request you all to put your fingers where I will read. So previously we have discussed about the rights. Now let's discuss about the responsibilities. As every citizen has fundamental rights defined by the Constitution, in the same way they have some responsibilities as well. These are the following. Loyalty to the state is the primary duty of every citizen. हर शख्स को अपने मुल्क के साथ जो है वो loyal होना है. Obedience to the constitution and law is the responsibility of every citizen. आइन का एहतराम करना है और law को एहतराम करना है, उसको obey करना है, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है. The citizens of Pakistan are not allowed to accept any title, honor or decoration, a form of foreign state except with the approval of the federal government. आप बाहर से किसी किस्म का भी तमगा या कोई भी जो डेकोरेशन है या कोई भी जो ऑनर है वो नहीं ले सकते, except when you are allowed by the state of Pakistan. It is the responsibility of citizens to vote and elect their representatives. ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वो वोट कास्ट करे और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करे. The citizens are responsible for defending the country in time of need. हर शहरी जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब मुल्क को ज़रूरत है तो वो अपने मुल्क को डिफेंड करे. किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको डिफेंड करना पड़ सकता है अपने मुल्क को. Respecting the beliefs, social, cultural, religious opinions and rights of other citizens. तमाम शहरी दूसरे शहरियों के आपको सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं उनको एहतराम करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के आइन के तहत जो आपकी जिम्मेदारियां आज मैंने आपको बताई हैं, उनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एवरी सिटीजन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ही इज बाउंड टू फुलफिल. सो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, अगर आपके कुछ हकूक हैं.
So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So write down the name and date, and then how you will do it. List down your following rights and responsibilities. So my dear students, आपके religious rights क्या हैं और उसके against आपकी responsibilities क्या हैं? Let me tell you that. पहला वाला जो है मैं आपको help out कर देती हूँ. Your right is that you it is your right that you can freely practice your religion, and it is your responsibility that you have to respect all the religions around you. So this is how you will complete the right, and you have to write down the responsibility against it. Okay, my dear students, for homework, you will do home activity number 2, and what responsibilities do you fulfill as a good citizen, and how does it contribute to the betterment of society? So my dear students, आप अपनी कौन सी जो है जिम्मेदारियां पूरा करते हैं as a good citizen, और ये किस तरीके से आपकी सोसाइटी को इफेक्ट करती हैं, आपने ये नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में. Next, what you will do is you will do question number 2 from exercise C. Discuss some rights and responsibilities of a citizen in the light of Constitution of Pakistan 1973. 1973 के आइन की रोशनी में आपने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सिटीजन्स के, you have to write down in detail in your notebook. So in the next class we will discuss about the organs of the government. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.